Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the holozoic nutrition and its steps. Let's move to the whiteboard. So, digestion and absorption. Dear students, अब जो अगले तमाम टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. Because we are going to discuss digestion in and absorption in animals. तो dear students, उससे पहले चंद एक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. All animals have similar requirements of food, although they vary in details. मतलब कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है तमाम एनिमल्स की वो सेम है. फूड कंपोनेंट सब के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है, बट उनकी डिटेल जो है वो डिफर करती हैं एनिमल टू एनिमल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. क्लियर? ऑल एनिमल्स must have the supply of oxygen, water, minerals, vitamins, amino acids, and glucose, fatty acids, and many other organic and inorganic components. So dear students, among the food supply, जितने भी animals हैं, they must be supplied with oxygen, water, minerals, vitamins, amino acids, glucose, fatty acids, and other some organic and inorganic components. But dear students, in nature, oxygen and water are present abundantly. While all other nutrients are rare in nature, like the vitamins or minerals or carbohydrates or proteins which we have to get through the body. So dear students, among them, vitamins and minerals, they are utilized directly by the body. इन तमाम फूड कंपोनेंट्स में से
विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे हैं जैसे ही आप इसको इंजेस्ट करते हैं तो ये फौरन ही इस्तेमाल हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं, बिकॉज दे आर टेकन इन देयर फुल एंड फाइनल फॉर्म्स। ये फुल एंड फाइनल फॉर्म्स में हम इंजेस्ट करते हैं और ये जाकर एज इट इज अपना काम दिखा देते हैं। बट एज फार एज amino acids and glucose or starch and fatty acids dear students, they are present in the form of proteins, carbohydrates, and lipids respectively. And they must need to be digested or converted into simpler compounds or molecules in order to get them utilized. तो जितने भी एनिमल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के बाद उससे हासिल करते हैं ग्लूकोज को। जितने भी एनिमल्स हैं वो लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के बाद हासिल करते हैं वहां से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के बाद वहां से हासिल करते हैं द अमीनो एसिड्स। दीज आर द यूनिट्स which are absorbable, which are diffusible across the cell membranes of the animals. Clear? Now, dear students, for this purpose, Allah has provided us with a very, very perfect system. There is a system which provides all these requirements in a sequence. एक sequence के तहत ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में एंटर होती हैं, डाइजेशन होती है, absorption होती है, assimilation होती है, ingestion होती है. So, all this is taken in a continuous and in a proper fashion manner. So, dear student, this is termed as holozoic nutrition. Holozoic nutrition. So, you have to understand the concept of holozoic nutrition. So, what is it? The process involving intake of food, means ingestion, then digestion, assimilation, then is absorption, then is assimilation, and finally ingestion is called holozoic nutrition. So these complete steps are called as, collectively they are termed as holozoic nutrition. Now we are going to discuss them step by step. So first of all, we have the first step of, we can write it as the steps of holozoic nutrition.
So the first step is ingestion. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था कि एनिमल्स जो होते हैं उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज ingestion. They are ingestive heterotrophs. So dear students, ingestion, the process of taking in of food into the digestive tract is called ingestion. Clear? यानी जब भी हम कोई निवाला तोड़कर कोई फूड पार्टिकल लेकर उसको अपने मुंह के अंदर रखेंगे या उसको चबाएंगे, so that is called as ingestion. So our digestive system starts from the oral cavity. आगे चलकर डिटेल से हम डिस्कस भी करने वाले हैं. So taking in of food, that is termed as ingestion. Next step is digestion. That is much important step, digestion. So this first we take food in the form of large particles, large complex non-diffusible particles. So they must be converted into small, simple and diffusible particles. That is what being done in this second step. So the process of conversion of large and complex non-diffusible food particles into small and simple diffusible particles is termed as digestion. क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, हम जो भी कोई फूड पार्टिकल खाते हैं, जो भी हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो एनिमल्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट दे टेक इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड यू हैव रेड इन द चैप्टर नंबर 2 दैट स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड. तो डियर स्टूडेंट्स, पॉलीसैकेराइड है, ये हमारे मेम्ब्रेन्स में कभी भी डिफ्यूज नहीं करेगी. इट्स अ लार्ज पार्टिकल, आपने पढ़ा था, इट कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स. So dear students, it must be broken down in order to get them simple and small particles, so they must be diffused across the membranes of the cells. Clear? तो इस तरह से कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, तो वो बड़े बड़े लार्ज पार्टिकल्स की शक्ल में होता है, कम्प्लेक्स पार्टिकल्स की शक्ल में होता है, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन्स के क्रॉस वो जो है क्रॉस नहीं कर सकता, डिफ्यूज नहीं कर सकता. सो इट मस्ट बी डाइजेस्टेड. सो दैट द सेकंड स्टेप. और डिस्टेंस याद रखिएगा, डाइजेशन it is of two types: intracellular digestion, which is the digestion within cell is called intracellular digestion, because intra means within. Intra means within and cellular means cell. तो जो सेल के अंदर डाइजेशन हो रही है, like for example like glycolysis. In the previous chapter we have discussed in detail. So glycolysis, it is occurring within the cell. आगे चलकर हम पढ़ेंगे अमीबा के अंदर भी, उसमें भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है. सो दिस काइंड ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन, while the second type of digestion is extracellular digestion. Extra means outside. जहां पर भी डियर स्टूडेंट्स एक्स लगता है, EX, like extruents or
exocytosis. So X means outside. So the digestion that occur outside the cells or within the cavities is called extracellular digestion. For example, digestion of proteins in the stomach cavity. It is outside the cell. It is occurring within the cavity of the stomach. So now the third step is absorption. Absorption means the process in which the diffusible, simple food particles like amino acids, like fatty acids, are taken into the bloodstream. Means जो आपने खाया और वो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद सिंपल पीसेस में होने के बाद, सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होने के बाद, if it is moved inside our bloodstream, so that is called as absorption. If it becomes the part of our blood, that is its absorption. Next is the fourth step. That is assimilation. So dear students, assimilation, the process in which the absorbed food components are utilized for making membranes or new structures or for getting energy is called assimilation. And finally, the fifth step is digestion. So dear students, digestion, it is the removal of undigested food material out of the body of an animal. तो जो कुछ खाया था वो सारा का सारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, बल्कि उसमें से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह गया, डियर स्टूडेंट्स, that is removed outside the body through a process which is called as digestion, or in higher animals it is also called as defecation. Inshallah, we will learn in the next few lectures the whole detail in the human beings. तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है. What is holozoic nutrition, and what is ingestion, what is digestion, what is absorption, assimilation, digestion, difference between intracellular and extracellular digestion. So dear students, hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.